द ललन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है हुमी आपका। थैंक यू जी। आपकी सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो आ रही है 5 मई को हॉटस्टार पे। जी। आ, बहुत ब्रीफली आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या कहानी है, आपके शब्दों से सुनना चाहता हूँ। कहानी ये है कि एक परिवार है एक फिक्टिशियस जगह में जो हम बॉर्डरलैंड्स बुलाते हैं। और वहाँ सास जो है, जो मेट्रियार्क है, डिम्पल कपाडिया। और उनके जो शी हैज टू बहूज और एक बेटी है। बेटी केमिस्ट है। और वो लोग एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब जड़ी बूटी और सब बेचते हैं। लेकिन वो फ्रंट है और एक्चुअली वो लोग एक खतरनाक, वेरी डॉजी बिजनेस चला रहे हैं, एक कार्टेल की। एंड जो लड़के हैं फैमिली के, जो विदेश में काम करते हैं, उन्होंने उन्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि ये सब चल रहा है घर पे। तो एक्चुअली दे थिंक कि ये विमेन लोग बहुत बोरिंग है, उनका लाइफ बोरिंग है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और एक बार साल में वो लोग आते हैं विजिट करने के लिए। उस टाइम पे सब कुछ, सब गन्स और चाकूज और जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सब कवर लॉक करते हैं गोडाउन में। और दे एक्ट लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल फॉर दोस 4 days टिल द मैन लीव। तो ये है माहौल सावित्री के घर में। जी, मैंने जब टीजर देखा था पहले पहल तो जो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वो टाइटल ट्रैक आता है और फिर वो शॉर्ट्स आते हैं तो मुझे थोड़ा अम्यूजिंग लगा, लेकिन मैं थोड़ा सिनिकल था कुछ वजहों से। मैंने 2 एपिसोड देखे हैं तो मैं सिनिकल था टीजर को देख के। एक तो ये कि जैसे जो टाइटल है सास बहू, आ, सास बहू शब्द इतना घिस गया है और उसको लेके ऐसे नोशंस बने हुए हैं ना कि अगर आप एक फ्रेश टाइटल नया टाइटल देते हो तो उससे उसका होराइजन बहुत बड़ा हो जाता है। वो कहता है ना कि बहुत विराट हो जाता है। तो एक तो ये है कि थोड़ा ये था कि कहीं अगर ये लोगों लोगों के मन में इसकी विराटता थोड़ी कम ना हो जाए। दूसरा ये था कि जैसे टीजर में इतनी गोलियां वोलियां नजर आती है ना तो ऐसा लगता है कि कहीं खाली यही तो नहीं है। फिर मैं नो। एपिसोड 1 देखा, एपिसोड 2 देखा और भूल गया कि ड्रग्स की बातें हैं, मैं भूल गया कि गोलियों की बातें हैं। मेरा सारा ध्यान जो सटल सटल चीजें हैं और जो दो बेटे वापस आते हैं और उनकी जो हरकतें होती हैं, वो नीचे गिर के लड़ रहे हैं और कहते हैं स्टुपिडिटी उनकी नजर आती है, तो मेरा सारा ध्यान उस पर चला गया। और यही इस सीरीज की विक्ट्री हो सकती है। जी। अभी और एपिसोड्स आने बाकी हैं तो इवेंचुअली क्या उसको लेके लोगों का आएगा, लेकिन 2 एपिसोड देखने के बाद मेरे मन में और रहा कि मैं और देखूं। तो जी। जो तो मेरा सिनिसिज्म है वो 2 एपिसोड्स ने तो गलत साबित किया है। तो टाइटल को लेके आपको नहीं लगता है कि इसकी विराटता बढ़ा देते अगर आप एकदम नया टाइटल रखते सास बहू को ना यूज करके? no, I think in fact it's a very interesting spin on uh, the. It's like taking that whole Starsbo concept and flipping it on its head. So, and that's why Flamingo actually comes in and gives it that quirk. I think title, promo, ये सब होने के बाद ना, once an audience starts watching it, especially on OTT, I think the true advertising is word of mouth. I mean, that's how I consume on OTT. I don't follow any reviews. I don't follow anything. I just, when people start talking about it and they say, hey, have you seen this show? Because there's so much on OTT, how do you break the clutter? So, I feel that, in fact, Stars Power Flamingo, बहुत सारे लोग have actually had the ulta reaction. Where they're like, firstly, Homi Adajania, Saas Bahu, ये क्या चल रहा है? And then when they see the promos, when they see the trailers, they understand that अच्छा they've taken the concept and flipped it fully and कुछ अलग ही निकलने वाला है. So I feel the title is very quirky. I like the title. It works for me. Another thing which I love what you said, in fact, कि ये सब action सिर्फ action चल रहा है या क्या हो रहा है इसमें? आई थिंक इट्स सैड दैट आजकल क्या होता है कि just because women are doing action, so everyone's attention is going to the action part of what's happening. If you actually look at the promo, there's a lot of other stuff happening with the dialogues, with the politics, with the uh, characters. लेकिन क्या हो रहा है कि सभी लोग मुझसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अरे ये पूरा एक्शन से भरा हुआ है, women are doing action,
ये तो it's so unique and I'm like why should that be unique? It's not that कि मैंने intentionally सोचा कि hey let me make the women do action and that will get eyeballs. मेरे लिए तो देखिए I grew up in a very gender sort of with no gender bias. I had very powerful women in my family, and I have always believed in gender equality. So for me, when I make a film, it's I don't think that oh should I put a man in the movie or should I put a woman in the movie. For me, they're just equal human beings. So for me, when the story was about what the people who are working outside think about the people inside the house, and therefore it was the Saas and the Bahus and the Beti, and how they in fact, if as you watch the episode, I don't want to give any spoilers, but you realize that the Saas has some complete, मतलब insane master plan. और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खुद हैंड पिक करके उनके जो बहूज है, she's picked them specifically to run the business, not to be the wives of the husbands. That's secondary. So it's very complicated. It's quite convoluted. लेकिन I from all the films I've made till now, it's the most masala filled project I've ever done. And I, in fact, remember जब मैंने shooting खत्म किया and then I saw the one teaser we had cut just after shoot, but I shot edited the teaser during the shoot. And even I was watching it and I'm like, who has made this? It's got so much madness going on, but it's such a entertaining and masala way. Whether it's the fights or the passion or the manipulation या जो अलग-अलग खेल जो कर रहे हैं ये अलग-अलग वारिस. So yeah, I actually was quite I surprised myself also. इसका एक तो ग्राउंड बहुत लार्ज है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है और उसमें जो उनके ऑपोजिट पार्टीज है, जो उनके दुश्मन है, उनकी ग्राउंडिंग कहाँ एकदम अलग ही कॉर्नर पे है. तो मतलब मुझे तो अभी से लग रहा है कि आप लोगों की प्लानिंग बहुत लंबी है, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन कुछ, क्योंकि बहुत कुछ है जो रिवील किया जा सकता है. बहुत कुछ कहता है ना कि फॉर्मूलाज हैं वो सेट किए जा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट पैदा किया जा सकते हैं. तो आपका क्या कुछ बताने का इरादा है सेकंड सीजन, थर्ड सीजन? नहीं अभी तक no, okay, I'll be very honest with you. It's 8 episode के बाद it's very open to another season for sure. The possibilities are so मतलब पूरा फैल के खुला हुआ है. And I've actually shot some options also when I was shooting the end, which could go into another place, but not been thought of yet. I don't think you can think of a second season till the first season works. So there's no point putting your energy into thinking about a second season until the first season works. And if it works, then you start thinking कि viewers जो है, which characters were they rooting for more? What did they want out of it? And then you would, I would think कि फिर वो हिसाब से you would write a second season. फ्लेमिंगो किस चीज का मेटाफर है यहाँ पे, आप बताना चाहेंगे? जैसे फ्लेमिंगो एक तो गुजरात का राज्य पक्षी भी है, और फ्लेमिंगो है उसको हिंदी में राजहंस बोलते हैं. और एक तो मुझे जो नजर आता है, आप बताइएगा, कि जैसे ऊपर से वो वाइट होता है और उसके पंख अंदर से काले होते हैं, नीचे से काले होते हैं. तो जो ऊपर से नजर आता है इस कहानी के अंदर कैरेक्टर्स हैं, और अंदर से क्या है, शायद फ्लेमिंगो उसका एक रूपक हो सकता है, मेटाफर हो सकता है. आप बताइए कि क्या उसका कुछ मेटाफर सोचा आपने या क्या? जी आपने ही बताया. अच्छा. These are very subtle things that filmmakers put into their films and then sit back and wonder, has anyone thought of this? And I did this from when I did Beak Cyrus. You put in कि हम छोटे-छोटे राज छुपाते हैं अपने फिल्म्स में खुद के लिए, to have a laugh at the end. जब हम when we are old, we'll sit and look back at one film and say, hey, in this shot, just pause it here, see in the corner what I've kept. तो ऐसे हम करते हैं to amuse ourselves. Now, Gajendra, you have to flipped it and already revealed this, so it's fantastic. फ्लेमिंगो जो होता है, जैसे डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर है, या जो दूसरी 3-4 महिलाएं उनके कैरेक्टर है, बिल्कुल दिखने में ऐसे लगेगा एकदम नाजुक सी हैं,
लेकिन वैसे ही वो फ्लेमिंगो भी नजर आता है जब वो पानी में खड़ा होता है, लेकिन वो फ्लेमिंगो सांप खा जाता है, उसको खेत में रखते हैं कि वो सांपों को खा जाए, कीड़ों को खा जाए, खेत को बचाए, पानी को साफ रखे। तो रूपक तो सेट होता है। जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आप अपने अपनी फिल्म्स में, प्रोजेक्ट्स में बहुत से एक्टर्स को बार बार लेते हैं, जैसे कि डिम्पल कपाड़िया और नसीर साहब तो पहली फिल्म से आप दो तीन प्रोजेक्ट्स में साथ में काम किया, डिम्पल जी तो शायद पांचों आपके डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट्स में रही हैं। जी। मैं ये पहले पूछना फिर चाहूंगा तो कि मेरे सब प्रोजेक्ट्स में है। जी जी, पूरे में रही हैं तो क्या, मतलब एक होता है ना, एक कोई श्रद्धा होती है मन में, एक इम्प्रिंट होता है उस कैरेक्टर का, जब आप फिल्म मेकर नहीं थे तब से कोई रोल देखा था, कोई कोई फिल्म देखा था और तब से कि यार इस आदमी से मेरा एसोसिएशन नहीं जाएगा, मैं इतना इसका फैन हूं, या उस चीज का वो इम्प्रिंट क्या था, इनिशियल इम्प्रिंट क्या था? नहीं जी, मैं तो किसी का फैन नहीं हूँ। मैं तो, अच्छा। मेरे अंदर तो फैन बनने का क्वालिटी ही नहीं है। आई एडमायर पीपल्स वर्क, आई रिस्पेक्ट देयर वर्क, बट डिम्पल तो आई डिड नॉट इवन, इन फैक्ट टिल टुडे भी बहुत बहुत खाते हैं, गाली खाता हूँ मैं डिम्पल से, बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ हर मूवीज. So when they make references to Bobby and something else, and I still haven't seen that. And she screams at me, but she also tells me don't see it. तो ऐसे ऐसे बात नहीं है, बट व्हाट डज टेंड टू हैपन इज, गजेंद्र क्या है ना, कि व्हेन वी मेक अ मूवी वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, and for me that experience is more important than what happens afterwards, because what happens afterwards is not in my control. But it's very important कि मैं जब पिक्चर बना रहा हूँ, that experience should be very positive, it should be full of love, good energy, and it should become a very good memory. कि बाद में जब हम लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे तो आई कैन टर्न अराउंड एंड से कि रिमेम्बर दैट टाइम यार. So it should, that journey should enrich you. And when you have positive, solid people who you've enjoyed an experience with, they become friends, you tend to repeat them, because it's not that you're repeating them if they were not good enough for the character. I repeat a lot of people who, because they're fantastic actors, and one is that, and two is that also you want to see there's still और क्या कर सकता हूँ मैं उनके साथ, क्योंकि नसीर is means his talent is immense. You know, I mean, my only regret is having been able to have made only one film with Irfan. We wanted to work together since Namesake आया था. उस टाइम से हम लोग बात करते थे कि we should definitely work together. He had seen Being Cyrus, और वो टाइम पे we said we must, और वो कभी मौका ही नहीं मिला कि कुछ ना कुछ, either he was doing something or I would, or the project would not work out, or I was busy. तो when अंग्रेजी मीडियम की अपॉर्चुनिटी आई, I said I don't care about anything, कि ये लास्ट जर्नी तो मुझे उनके साथ ही बिताना है. And I wish I had more, because if I would have repeated anyone, for sure it would have been Irfan Khan. आप मंडी फिल्म में नसीर साहब का जो कैरेक्टर था बड़ा सबड्यूड सा था, अगर आपने मंडी देखी हो No, तो। I saw a Wednesday, but Monday. हाँ, उनकी नसीर साहब की एक फिल्म है मंडी, श्याम बेनेगल ने बनाई थी, जिसमें एक एक वैश्यालय होता है, एक प्रोस्टिट्यूशन का एक घर होता है जहाँ प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, उनके यहाँ वो एक आदमी होता है जो कच्छा और चोला पहन के उनकी मदद करता है, उनके काम करता है। तो जो आपने बीइंग साइरस और फाइंडिंग फैनी में नसीर साहब को सबड्यूड और पैसिव दिखाया है, उससे पहले उनको सिर्फ एक ही फिल्म में देखा गया था, मंडी में। अच्छा. आप अकेले हैं जिन्होंने उनसे दो बार वापस वैसा ही रोल करवाया, नहीं तो नसीब साहब को लेकर तो ये होता है ना कि एम्बिशियसली करवाते हैं, कुछ करवाया जाए। Correct. आप ऐसे हो जो बोल रहे हो कुछ नहीं करवाना है, एग्जाम Correct. एग्जिस्ट ही नहीं करता वो आदमी। But तो then Dimple also tells me this sometimes. You know, sometimes वो performance देगी, and I'm like, what are you doing? I said, please don't act. Worst thing in an actor is to see them act. So he said, hello, this is how we are, okay? This is how Bollywood films are. You have to be loud, you have to be there. I said, I understand all that, लेकिन इधर मत कर please यार. तो ये चलते रहते हैं हम लोग के. एज अ फिल्म मेकर लैंग्वेज को लेके आपका क्या पैरामीटर रहता है? जैसे बीइंग साइरस पारसी लैंग्वेज को लेके ऑथेंटिसिटी आपने बरती थी, आपने फाइंडिंग फैनी में जो कोंकणी लैंग्वेज के डायलॉग्स आते हैं वो आपने बरते थे, इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी मीडियम में इरफान मारवाड़ी बोलते हुए नजर आए थे, राजस्थानी जो मुझे बड़ी नफरत होती है जब मैं फिल्मों में देखता हूँ राजस्थानी को किल करते हैं, जैसे वो हरियाणवी राजस्थानी मिक्स कर देते हैं। इसमें आपका जो बैकड्रॉप है वो गुजरात का है, लेकिन कैरेक्टर है वो थोड़ा राजस्थानी टच है उनकी लैंग्वेज में, किस पे सीरीज अगर में।
सासबो और नहीं, फ्लेमिंगो में? तो सासबो और फ्लेमिंगो में हम बहुत ही कॉन्शियस थे कि वी वांट टू पुट इट इन अ फिक्टिशियस प्लेस। तो ये वो प्लेस इज कॉल्ड रण प्रदेश, जो टाउनशिप है हस्तीपुर है, जहाँ हवेली है वो बॉर्डरलैंड्स बुलाते हैं। तो इट इज अ फिक्टिशियस प्लेस, और हम कॉन्शियसली डिसाइड किया कि इट शुड नॉट बी ऑफ एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी। So the clothes actually are from that the whole northwestern belt, where they were from Kutch up to from Rajasthan, Kutch, in that whole area. We took colors, we took certain fabrics from all different places, और एक kind of look दिया. The dialect also, हमने कुछ 6 या 7 dialects को mix करके ये जो वो लोग बात करते हैं, we made it our own dialect, which was very difficult because it doesn't exist. So we had a dialect coach. We figured out the dialect कि ये words के लिए they'll use these words for these things, and also they'll talk in different degrees. तो सावित्री जो है, जो रानी बा जो डिम्पल की किरदार, she speaks in the full dialect, whereas शांता जो राधिका मदान की किरदार, she speaks with much less of an accent. She studied in France. Bijli, which is Isha Dalwar, has traveled to Spain, to Bombay, Delhi. She's the distributor in the business. So she speaks, when you go further in the episode, she speaks Spanish, and she doesn't speak great English, but she speaks Spanish and she speaks a dialect because they've been trained only for their work. So that is the whole reason why we didn't, and also we didn't want any one type of community or people or a place to say, hey, this doesn't happen here. So it has been very consciously decided to keep it. And that is why if you think it's Rajasthani, you will get pissed off because it's not Rajasthani. So you'll actually think, अरे यार ये बहुत खराब से बोल रहे हैं Rajasthani. It's not Rajasthani. It's not any of those dialects. It's a mix and match of many dialects, which is what this character speak in. आप सेल्फ स्कूल्ड है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत जी नहीं हूँ जी जी, फिल्म मेकिंग में। absolutely. जी तो मैं देख रहा था, बीइंग साइरस मैंने देखी, फाइंडिंग फैनी देखी, कॉकटेल देखी, आपकी सारी फिल्म देखी, अंग्रेजी मीडियम देखी। इस सीरीज तक आता है तो ऐसा लग रहा है कि अब आप कहते हैं ना कि अब रंग जमने लगा है, आपका पकड़ एक यूनिक पकड़ सी बनती हुई नजर आ रही है कि जितना इसमें जैसे मैंने कहा सटल आपने बना दिया एनवायरनमेंट को, है ना, कि जैसे मैं हुक्ड हूँ उसको लेके, जितना हुक्ड मैं इस सीरीज में सटल चीजों को, कॉमेडी को लेके होता हूँ, उतना पिछले किसी भी प्रोजेक्ट में उतना ज्यादा नहीं हुआ। उनका अलग एक फ्लेवर था। तो क्या आपको लग रहा है कि आप साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं अपने आप को, या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है? No, I absolutely agree with you. I think that's a fabulous observation because it's an internal observation कि मैंने experience अभी किया है. You know, after अंग्रेजी medium, क्या हुआ था कि Irfan, when we were making that film, we were making it because we realized that this was the last film he was going to make. And he was very clear that I said that ज़रूरत नहीं है यार, considering what's going on, you don't need to be making a film at this point. And he said that नहीं यार, Omi, मुझे मेरे craft से बहुत मोहब्बत है. It's the only thing that makes me feel alive. Or he said we have to make it, and we'll have the idea is the experience, like you said. We will have fun doing it. We'll laugh, we'll cry, but we'll live life for that little bit of that journey. And when I went through that experience, I came out realizing that हम सिर्फ पिक्चर बना रहे हैं, हम कैंसर को क्योर नहीं कर रहे, हम किसी को मार्स पे नहीं भेज रहे. We are just making a picture. Do it with love, do it with happiness, do it with the privilege that you're in to make movies, and enjoy the process as much as you can, because that's all you've got. That's all that will be there. And when I realized that, and I actually realized it, I wasn't just talking about it. It made me much lighter. मतलब कुछ अंदर से कुछ, everything became शांत. And I realized that if I actually approach making films like this, the clarity with which I can do it, and I will not get tired, and I will, you know, I never used to make films that often because, and everyone keeps asking me this, and I used to say, नहीं यार, मुझे लाइफ भी जीना है, मुझे स्कूबा डाइविंग जाना है, मैं स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, मुझे स्नोबोर्डिंग करना है, बच्चे के साथ खेलना है, बुक्स पढ़ना है, और फिर
इनके बीच में मैं एक एक पिक्चर बनाता हूँ यार, हर हर 3 साल, हर 4 साल। तो that has changed. So what you're saying is correct. I've realized that if I approach it with this lightness that I learned, which I took away from my experience from Angrezi medium, I really enjoy the process and I can be very creative in the process because my energy is only towards the creativity and not कि अरे यार सूरज सनसेट हो रहा है, I'm losing light, या ये actor is ill, क्या कुछ टेक्निकल ग्लिच है कैमरा में, उसका मतलब no point worrying about things like that. ये अपने हाथ में नहीं है. So it was like that. So once I realized that, I realized I can become way more immersed in making movies. And this web series was the experience. My producer said, and lots of people told me, "अरे तू पागल हो जाएगा 8 episode direct करके. It's like making 3.5 feature films in one go." He said, "You'll never manage to direct it." किसी co-directors को बुलाया, हर episode के लिए एक director को hire कर and become the showrunner. Showrunner का मतलब ही मुझे अब तक पता नहीं क्या है, because I can either direct it or I should not be there only. I'm getting involved with the director. So I said I'll direct all 8 episodes, and I did not get tired at all. I loved every moment of it. And you're right. I mean, for me, I used to work, बड़ा गैप लेके मैं काम करता था. अब मुझे तो I told my friends this. I said that now I'm 51 and I've decided when I retire I'm going to start making movies. तो ये मेरा retirement plan है. So you'll have to see much more of me. Sorry जी. मैं ये पूछने भी वाला था ना, क्योंकि 17-18 साल में आपने शायद आप डायरेक्टोरियली 5वां प्रोजेक्ट आपका ये है। मतलब आपने 4 फिल्म बनाई और ये 5वीं सीरीज है। आप जैसे मान लीजिए सीजन्स और बनाने अगर पड़ेंगे इसकी सक्सेस के बाद, तो फिर रेडी हो आप, क्योंकि अब आपको बहुत तेजी से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं, I just wrapped a feature film अच्छा। 3 days ago. So I finished the web series, I finished a full feature film. अब मैं एक सियाचिन पे एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ एंड ऑफ दिस ईयर, और फिर आगे देखते हैं, लेकिन थोड़ा अभी तक स्ट्रेंथ है बाकी। ये बड़ा अमेजिंग है कि जैसे आप इतने सालों में इतना कम प्रोजेक्ट किया है। तो जैसे ये मेरे क्वेश्चन रहता है, मैं कई फिल्म मेकर से, जैसे एक केरल के फिल्म मेकर हैं, उनको कई नेशनल अवार्ड मिले हैं और वो बहुत सोशली रेलेवेंट फिल्म बनाते हैं। तो वो एक डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, सरकारी 30-35 हजार की सैलरी, उसी से घर चलता है और फिल्म उनका कोई पैसा नहीं कमाती है। तो आपका करियर देख के मुझे लगा कि आप अर्निंग के लिए फिर क्या करते हो? अगर इतने गैप्स से आपने आज तक बहुत कम फिल्में बनाई है, तो आप अर्निंग का एक आप उसके लिए आप स्कूबा डाइविंग वगैरह ये ही आपका सोर्स ऑफ अर्निंग रहता है, या क्रिएटिव आप करते रहते हो? No, I have a wife who works and is very successful at her work. Yeah. So between both of us, I think we get by fine. Yeah. And I mean, I'm touch wood, I'm lucky I earn enough on the movies. And yeah, so, and I'm not someone who really wants too many things. If you see all my interviews, you see me wearing the same black t-shirt. मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा. But I'm lucky. I'm comfortable and I've made good decisions in life. Invested well in what I had to do. So can't complain. आप स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, अंडर वाटर भी आप बहुत करते हैं। कुछ फिल्म्स और सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज आपने अमेजिंग देखी अंडर वाटर? जैसे कि अभी अवतार 2 आई थी, अलग ही चीज थी वो। आप सजेस्ट कर पाएंगे हमको जो आपने देखा हो कि यार? जी, आई थिंक सबसे फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट्री ऑन द ओशन केम आउट, बीबीसी ने जो बनाए थे, ब्लू प्लैनेट जी, अलग-अलग सीरीज, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. मतलब no one has seen the ocean like that. Attenborough उसमें नरेटर. Attenborough, okay, हाँ जी. And then Avatar is all the inspiration has been taken from underwater. So yeah, and then there are many actually old films, The Abyss, जो था. So yeah, in fact, I think I should make one also. Lakshadweep. I'll go back to Lakshadweep and make one there. अंग्रेजी मीडियम को लेकर आपने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया था कि जैसे आप पूरे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो और फिर आप जो बड़ा होता है उसको छोड़ना भी आपको पड़ता है, और फिर ताकि वो लौट के वापस आपके पास आ सके।
जी। वैसे ही बीइंग साइरस में भी एक डायलॉग होता है कि हम दुनिया को जितना थामते हैं उतना ही हमारा अंदर का पोर्शन भी खोता चला जाता है। तो होता है ना जी। कि भाई द मोर वी ग्रैब द वर्ल्ड, वी लूज द रिस्पेक्ट। जी। ये ये आप इतना घूमे हो दुनिया, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, यूनिक एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो इस चीज को लेके क्या ऑब्जर्वेशन आपका, आपने पर्सनली रियलाइज किया है कि यार लाइफ में आप जितना लेते हो उतना खो जाता है, इसको, इसका कुछ आप लेबरेट कर पाएंगे इसको कुछ? जी, I think I was lucky enough to learn at a young age. Uh, जब मैं 20 और 30 के बीच में, when all my friends were getting jobs, I used to do freelance jobs, और जो भी पैसा मिलता था I used to travel, because I think the greatest education is travel, and that is where I met people like the people in this show who were just gypsies traveling, no permanent homes. I traveled to Vietnam. I remember I lived in Vietnam for 1 month on $147. एक स्कूटी पे I used to stay in the Mekong with these Vietnamese families. मतलब they would speak in Vietnamese, मैं तो भाषा नहीं जानता था. But I realized that all human beings are interconnected at the core. They have this same pain. The things that may give them pain may be different, but when they feel pain, they feel pain. They feel pleasure. They feel anger, sadness. सब सेम, हम सब सेम है. बाहर से अलग दिखते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है. And for me, learning that made me very free, because I realized that what we keep chasing is not going to give you happiness. So for me, it was a very good learning experience and early in my life. So when I used to live in Lakshadweep and be a diving instructor, I used to wear a lungi. I used to have 2 lungis, so that was my clothes. और कुछ नहीं पहनता था. And I used to sleep on a jetty. और jetty पे हम सोते थे under the stars. And I realized that I actually had nothing and I was happiest. And I realized when you have nothing and you're happy, you can't be happier. And from that, उसका मतलब है कि happiness is not from things. Things don't give you happiness. Things are things. So you have to understand this chase that we all have in life. कि हम लोग को, मुझे ये घर चाहिए और बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे प्लेन. अरे, no harm in doing all that, but don't think that that will define your happiness. Whether it's there or not there, that should not change you. And what's worse is now अपना social media के साथ क्या हो रहा है कि we are growing an entire generation of people जो external validation पे they rely on that for their happiness, and suddenly they realize it's not that their external validation stops. उन लोग को likes मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो खरीद रहे हैं, वो सब चल रहा है ये सब, but suddenly it's a very unnatural life, so finally it is not going to lead to fulfillment. So I think the faster we realize this कि ना life finite है, इतना time है इधर, enjoy कर, don't harm people, give love to people, be there for everyone, and get that energy around you. उससे you can't have a better life. That then you are successful. Because success is not how much you have in the bank. मेरे लिए तो success is how well I go to sleep at night. And you can only sleep well if you have these qualities. So it's a simple learning, but somehow the system and society just pushes everyone to the other side. So it's difficult because I have मेरे भी 2 बच्चे हैं, and they say, I mean, I used to tell them that when you grow up, like, people tell their kid, बच्चे लोग कहते हैं कि when you grow up, become a doctor, become an engineer, become a scientist, जो फलाना दिखना, become a filmmaker. And I'm like, no. When you grow up, become happy. Be kind and become happy. उससे और सक्सेस नहीं मिलने वाला है. तो यही मेरा मंत्र है. मैं ये मेरा एक क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या, आपने बता दी इस आंसर में. मैं फिनिश करने वाला था लेकिन आपके क्लोजिंग ने मुझे एक क्वेश्चन और दिया है कि जैसे आपके 2 बच्चे हैं, आप उनके वीडियोस भी डालते हो, मैं देखता हूँ, बड़े जी. अमेजिंग से वीडियोस होते हैं. मान लीजिए वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, मान लीजिए कि आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में उनको ये चीजें सिखानी जरूरी है, पढ़ाई इतनी उनको आनी जरूरी है, नहीं तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए पेरेंट को? नहीं करना चाहते हैं तो you can't see, it's a fine line. You can't leave children and say आपको जो भी करना है खुश. If I tell my बच्चा कि be happy and do whatever make you happy, they'll say हाँ डैडी हम लोग को अभी 12 घंटा के लिए वीडियो गेम्स खेलना है, that will make us happy. ऐसी बात नहीं है.
A child is a child till they are about 16. They don't have free will. They can't understand. So you have to obviously make them realize that there is a certain system they have to, unless they're going to live off the grid. So you have to equip them for life. Equip करने के लिए they have to follow certain things. But you can't, at the cost of a child's happiness, force down your viewpoints or what you didn't have in your life. That when you were a child, कि अभी मेरे पास नहीं था तो बच्चा को करना ही पड़ेगा या देना ही पड़ेगा. It's a very wrong way of looking at it. I think we have to treat every single person as a different individual and respect होना चाहिए कि I respect your difference. I may not, even if I don't agree with your viewpoint, I should respect that you should have a viewpoint. And I think that's very important to live life like that. And I think the world will become a happier place if we all do that. मिया जानी, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष आपकी सीरीज के लिए. 5 मई को व्हाट्सएप आ रही है. Thank you. सीरीज आने के बाद हम और बात करेंगे, उसके एनालिसिस कुछ करेंगे अगर समय होगा तो. ऑल Thank you, Kalendra ji. थैंक यू. टेक केयर. You take care. Thank you.